back. बोलो बेटा, any doubts? ओके, चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. यस सर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमारा, इसमें हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट है. So we had done one question in simultaneous observation also. So a similar question here. So let's see that. Circle. At 11:03 hours, an observer on a vessel steering 336 degrees true at 14 knots found the sun altitude to be 89 degrees 29.2 minutes, bearing southeasterly. Declination of the sun is given, GHA of the sun is given. Later, at 13:12 hours, a point of land whose position is given in the question was detected by radar at a range of 23 miles. Find the vessel's position at the time of second observation. Now, before we start with the question, I'm sure all of us would agree from our knowledge that at 11:03, it's a high altitude celestial observation. So we get a position circle with GP of the sun as the center and TZD as the radius. At 13:12, we again get another position circle with the point of land as the center and radar range as the radius. Now, since we have two position circles separated by a certain interval, we need to run up the first position circle. Beta, is the question clear? Any doubt in the question? Clear, sir. Okay, all right. And to do so, we'll have to transfer nothing else but only the center of the first circle. We do not have a choice when it comes to transferring position circles. It is the center and only the center that needs to be transferred. So we have the 1103 PC. That 1103 PC shall be drawn with the center as the sun's GP. What will be the GP of the sun? Latitude shall be equal to the declination and longitude shall depend on GHA. Here the GHA is more than 180. So the longitude will be, because longitude cannot be more than 180, it shall be 360 minus GHA, and this time the longitude shall be easterly. So we get the coordinates of the GP, and that becomes the center of 1103 PC. Radius of 1103 PC shall be equal to TZD. True altitude is given as 89 degrees 29.2 minutes, which gives us the TZD or the radius as 30.8 miles. Now we run up this center. Which center? Whose latitude is 13 degrees 26 minutes south and longitude is 055 degrees 08.8 minutes east. We run it up from 1103 to 1312. During this interval, the vessel shall be doing a course of 336 degrees true, and at 14 knots, the vessel shall be covering a distance of 30.1 miles. Now, this part of it I have not shown on the screen, but I have calculated it. You can also calculate just to save on time. I'm assuming that you'll be able to calculate the coordinates of the transferred center, 1103 center, which is transferred, applying this run using plane and parallel sailing. We get the 1103 PC transferred to 1312, center of that rather. The center comes to 12 degrees 58.8 minutes south and 054 degrees 56.4 minutes east. Please do this calculation and see that you're comfortable and you are able to get this as the center of the transferred PC.
The radius obviously shall remain the same as the original PC, which will be 30.8 minutes. Now 1312 PC, which is by radar range, will have its center as the point on land, whose lat and long is given in the question, and the radius shall be 23 miles. Okay, beta. So we have obtained the information now. We can plot the transferred PC as well as the 1312 PC, and their intersection will give us the fix. So up to here, beta, this was the calculation part. Up to here, any doubts coming in? No, sir. Okay, beta. Great. Let's move ahead. Now, having transferred the center of the first PC, now we can draw two position circles for the same time. One position circle shall be the transferred position circle. The first position circle transferred to 1312 with the center in 12 degrees 58.8 minutes south, 054 degrees 56.4 minutes east, and radius of 30.8 minutes or miles. The second position circle will be observed position circle for 1312 with center as the point on land and radius as the radar range of 23 miles. So these are the two position circles which we are going to plot now. Both are for 1312, so can be plotted. So we have the 1312 transferred PC, whose center we are calling as X, whose coordinates are 12 degrees 58.8 minutes south and 54 degrees 56.4 minutes east, and the radius of the PC shall be 30.8 miles or minutes. And 1312 PC, which is an observed position circle, we are calling it center as Y. Coordinates of Y and radius of the PC are there on the screen. Now the DLAT from X to Y, X is the center of transferred PC, Y is the center of the observed PC. DLAT between their centers happens to be 40.8 minutes north. That means Y is 40.8 minutes north of X, and D long between the two happens to be 11.4 minutes west, and MLAT between the two is 12 degrees 38.4 minutes south. Using this MLAT, this D long can be converted into departure from X to Y, and the departure comes to 11.1 minute west. Now with this information, we can get going with the plotting. First, we have this latitude of X, that is the center of the transferred position circle. We have the longitude of X. Obviously, this point is the point X. And what is point X? It is the center of the transferred PC. Now, using a suitable scale we have taken is 1 centimeter representing 5 miles, because distances involved are slightly larger, like 23 miles and 30 miles, and therefore the scale is 1 centimeter is to 5 miles. Using this scale, we can mark off the DLAT and get the latitude of the point Y. So we mark off this DLAT using this scale. The DLAT you can see here, the DLAT was 40.8 minutes north. We mark off that DLAT and we get this is the latitude of point Y. Likewise, we can mark off the departure from X to Y and get the longitude of point Y, and obviously then where it intersects here is the point Y, and this point Y is going to be the center of the position circle, which is by radar range. So what we have done, we have plotted point X and Y. Now with point X as center and radius of 30.8 miles, using the scale of 1 centimeter equal to 5 miles, we draw the transferred position circle, and this one is the transferred position circle which has come on the screen. So now beta, the transferred position circle is plotted, which was a high altitude observation that we have plotted,
Any doubts coming in up to here? Yeah, that's right, beta. Certainly, when the scale is large, the errors also are going to be large. So a little bit difference in the answer is not going to matter. Sir, बेटा इसका कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है. It will change with the scale which you are using. Exactly. And इस केस में बेटा स्केल को छोटा करने का कोई तरीका भी नहीं है. There is no method जिसके साथ हम स्केल को 1:2 पे ले आएं या 1:3 पे ले आएं. पुराने वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास चॉइस थी कि भाई हमने प्लेन सेलिंग के साथ जो है उसको प्लॉट को छोटा कर दिया एंड वी वर एबल टू इम्प्रूव ऑन द स्केल. यहाँ हम कर नहीं सकते बेटा. ओके ग्रेट. सर ये पोजीशन सर्कल भी तो दो जगह पे कट करेंगे एक दूसरे को, सर. हाँ वेरी गुड बेटा. ड्रॉ करें. अभी मैं दूसरा वाला बनाता हूँ, फिर डाउट आएगा. अब लेट अस सी हाउ वी रिजॉल्व दैट डाउट. हाँ सर, ये जो पोजीशन सर्कल ड्रा किया है वो सर एक्स से लेकर ड्रा किया ना. बेटा फिर से पूछो, योर वॉइस वाज डल. हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हमने जो सर्कल ड्रा किया है 30.8 का, ये एक्स के रेफरेंस में ड्रा किया ना. Sorry, couldn't get you. Ask again, beta. But your voice is not clear. I don't know why. Sir, now my voice clear? Little better. सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, ये तो जो हमने सर्कल ड्रा किया है 30.8, ये सर हमने ड्रा किया ना सर एक्स से. ये हमने बेटा ट्रांसफर्ड पोजीशन है. हमने जो इनिशियल सेंटर था जीपी थी उस पे रन लगाया था ना. दैट इज हाउ वी गॉट दिस ट्रांसफर्ड पोजीशन एक्स. हाँ सर, ओके. मतलब ये जो सर मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये जो हम यहाँ पे हम ग्राफ पेपर में जो ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, तो वो हम एक्स से ड्रॉ करेंगे ना सर. हाँ दैट्स राइट बेटा. द सेंटर इज एट एक्स. ओके सर. ओके सर और एक क्वेश्चन था जो ये एक्स का ये आ रहा है आफ्टर द डेज वर्क वाला ट्रांसफरिंग, इसमें 12 डिग्री 58.8 है बट कैलकुलेशन पे 58.5 आ रहा है सर. ओह दैट्स पॉसिबल बेटा. हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो. दैट्स फाइन. ओके सर. ओके यस सर, उसके वजह से ही वो आ रहा था गलत. 11.2 डी लॉन्ग. ओके ऑल राइट. ठीक है बेटा, हो सकता है देयर कैन बी ए मिस्टेक इन द कैलकुलेशन. Likewise, with y as center and radius of 23 miles using the same scale, we draw the 1312 observed position circle. This is the 1312 position circle and this is the 1312 transferred position circle. These two position circles are intersecting at this point here, which we can call as A, and it's also intersecting at this point which we can call as B. So do we have any hint given in the question जिससे हम पता लगा सकें बेटा which is our position, A or B? Yes sir, southeast A is our position. Sun is at southeast. Very good beta. Great. That's right. Let's see that. That means in this case the vessel could be either at position A or position B. Now if you go back to the question, it says the sun was bearing southeasterly. Now obviously the sun's position in this case will be represented by its GP, which is getting transferred to X. So obviously if the sun was bearing southeasterly, the vessel has to be at point A for the sun to bear southeasterly. Therefore in this case position B gets ruled out and the vessel's position happens to be then point A. Okay beta, all right. So that is how we select the correct position. A is our actual position.
So any doubts up to here, beta? Sir, can I explain that position A, sir? Southeasterly how? Okay, beta. Now they have mentioned in the question that the sun is bearing southeasterly. The position of the sun is represented by the GP, beta, GP, and the GP is transferred at point X. So basically the sun is at point X. Now if sun is at X, and if the vessel is at B, sun will be southwest of the position. So which is not correct. If you are at A, then position X is southeast of you, which is correct. Okay, sir. Okay, sir. Sir, Okay. the location of the observer is at 6131. Correct, sir? That is right, beta. Now we can measure its D-lat from one of the reference latitudes. Also the departure using the same scale as the scale for the plot. We get the D-lat from latitude of X as 21 minutes north, and we get departure from longitude of Y as 13.3 minutes west. We can use plane and parallel sailing formula and use the coordinates of the reference points from where the measurement of D-lat and departure has been done, and we can then apply them here, and we end up getting, when we convert the departure into D long and we apply, you can see the working on the screen, and it eventually gives us the fix at 1312 as 12 degrees 37.8 minutes south and 54 degrees 31.4 minutes east. So here we had two position circles. We transferred one of the position circles. You could have a situation in which you could have one position circle and one position line. So the combination could be two PLs, two PCs, or one PL and one PC. Okay, beta. Great. So that gives us the position and completes the question. Any doubts coming in now? You can, beta. You can. आप कोई भी reference latitude ले सकते हो to obtain your D-lat, and you can take any longitude to obtain your departure. It is your choice. Recommended one is the nearest lat and long. Okay, beta. Great. So with this we complete our staggered Sir, observations. इसके ऊपर स्टेप्स बता देंगे सर, ऐसे कि पहले क्या 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 एक बार रिवाइज रिमाइंड में वो बैठने के लिए माइंड में. ओके बेटा, हमें पहला पीसी पोजीशन सर्कल दिया गया था 1103 के लिए. जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी दैट वाज 1312. तो सबसे पहले तो हमने 11 था उसके सेंटर को रन अप्लाई किया टू ट्रांसफर इट टू 1312. वो पोजीशन आ गई पोजीशन एक्स. दिस वी डिड बाय प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग. पोजीशन एक्स से सेम रेडियस के साथ हमने ये ट्रांसफर्ड पोजीशन सर्कल ड्रॉ कर दिया. यू कैन सी इज मेंशन्ड हियर ट्रांसफर्ड पीसी. देन 1312 का जो पीसी था दैट वाज ए रडार रेंज फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लैंड. सो वी हैड द पॉइंट ऑफ लैंड एट वाई. हमने रडार रेंज के इक्वल अपना कंपास ओपन किया एंड वी ड्रू द सेकेंड पोजीशन सर्कल. इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का जो है दैट इज आवर फिक्स. Point B is cancelled out because it is mentioned that the GP of the sun or the sun is southeast of the vessel. So sun is at point X. If B is our position, it will be southwest. So B is cancelled out. A is the fix. Okay, sir. Thank you. Okay, great, beta. So that completes our staggered observations. So shall I close this now? Yes, sir. Okay, great. Okay, so beta हमारा staggered observation का जो examples थी they are completed, and now I will be sending you assignment number 2. It will have about 20 or so questions.
इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. You will have questions on side solving, you will have questions on plotting also. And इनमें आपको और भी typical questions मिलेंगे other than one what we have discussed here. छोटे छोटे concept और भी इसमें add on हो सकते हैं. So I'll be sending you the solution, practice those questions and take help from the solutions in case you get stuck. Okay. Now with this topic completed, अब बेटा हमारे पास we still have some time. So अब जो बेटा आगे का टॉपिक आता है, I want to cover up the concept of PZX triangle and the rational horizon diagram. So वो आज पूरा तो complete नहीं कर पाएंगे, but at least the basics we can cover up. We can cover up the horizon system and the equinoctial system. So that is what I am going to do. So comfortable बेटा, चलें presentation पे? हाँ जी सर, रहने दो प्लीज. हाँ सर, ये इसी पे रहते हैं सर. हाँ सर, सर मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैंने लास्ट पे क्लास मिस कर दी. आज का तो कुछ सब कुछ बाउंस होके गया ऊपर से, पता नहीं क्यों. सर अब सर क्लास आज एंड करो सर, कल करा देंगे. रैशनल हॉराइजन नोट्स ले लीजिए, हम रिवाइज कर लेंगे, कल इजी रहेगा समझने के लिए, फटाक से हो जाएगा. ओके, ऑल राइट, ठीक है बेटा, नो इश्यूज. तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा दिया आपने, जो बस जो सारे लॉन्ग बाई क्रोन एक्स में रेडी ने जो पढ़ाया था, बस वही है. क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे समझ नहीं आता, 2 पार्ट्स में जो देता है मिक्स करके, तो उसमें मुझे इशू आता है. पहला पार्ट हो जाता है लेकिन सेकंड पार्ट नहीं हो पाता है. कोई बात नहीं बेटा, अभी मैं असाइनमेंट भेज रहा हूँ, जस्ट वर्क आउट दैट असाइनमेंट, सब क्लियर हो जाएंगे. सर हाई अल्टीट्यूड का थोड़ा एक बार टचअप करेंगे तो अच्छा रहेगा सर. हाई अल्टीट्यूड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कुछ. हाई एल्टीट्यूड बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा? नहीं सर, अभी ये जो क्वेश्चन करवाएं सर, ये थोड़ा सा आइडिया लगा रहा है, बट हाई एल्टीट्यूड का बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है सर. कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये क्या होता है? नहीं सर. ओके, ठीक है बेटा, एक काम करना, मैंने बेटा अभी ना तुम्हारे ग्रुप पे एक स्क्रीनशॉट डाला है, हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, उसे याद कर लो बेटा, रिमेंबर इट. ओके, याद कर लो बस उसे, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए. अगर इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस. ओके सर, ओके. Sir, can you kindly share the video of today's staggered observation in the group? बेटा इसका वीडियो नहीं है अवेलेबल. सर थोड़ा रफ प्लॉट बता सकते हैं क्या? ये जैसे आप लास्ट 2 क्वेश्चंस में करवाए ना रफ प्लॉट से, सेलेस्टियल पीएल का सर समझ में आ रहा है, लेकिन ये हाई अल्टीट्यूड का सर कैसे, मतलब लैंड से सन के अल्टीट्यूड को ट्रांसफर कर रहे हैं सर, ये समझ में नहीं पड़ रहा है. लोग लैंड के पोजीशन से ले रहे हैं ना सर, वैसा मतलब वैसे अभी जैसे आप करवाए. ओके, यू ओके, ऑल राइट बेटा. इसमें डाउट किस चीज में आ रहा है? सर पूरा बाउंस हो रहा है सर. सर एक बात पूछनी थी सर, ये अभी आप ओके, मैं बताता हूँ तुम्हें. क्या एक काम करो, मैं जो असाइनमेंट तुम्हें भेज रहा हूँ ना, उसमें 2 हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस हैं. ओके, मैं उनके सोल्यूशन भी भेज रहा हूँ साथ में. सो वर्कआउट, ट्राई टू वर्कआउट दोज क्वेश्चंस. इफ यू गेट स्टक, लुक एट द सॉल्यूशंस. जहाँ जहाँ पे डाउट आते हैं मुझे बताना कल. ओके सर. ओके, और बताओ बेटा. सर मैं जो बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 6 में, जैसे उसमें दे देता है कि ओके ड्रॉ फाइंड द पीएल एंड पोजीशन थ्रू इट पासेस यूजिंग दिस मेथड, इंटरसेप्ट और कुछ भी. फिर सेकंड, वर्क विदाउट वर्किंग आउट द साइड, व्हाट फाइंड व्हाट लॉन्गिट्यूड एंड ऑब्जर्व गेट द ऑब्जर्व साइड वाज कैलकुलेटेड यूजिंग लॉन्ग बाय क्रोन मेथड. ये जो 2 क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं ना, इसमें कंफ्यूजन होता है, नहीं हो पा रहा है सेकंड टाइप में. ओके बेटा, वर्कआउट द असाइनमेंट एक बार देखो, वहाँ पे ये सवाल भी है, उसका सोल्यूशन भी है. हैव ए लुक, जो डाउट आते हैं कल मुझे बताओ. ओके सर. ओके ओके, और बेटा और बताओ, और क्या डाउट्स आ रहे हैं अभी तक टिल नाउ?
सर ये स्टार डाउट में सेशन नहीं है ना, मेरे कराओगे नहीं ना अभी आप? वन बाय वन अगेन। मैं कह रहा हूँ सर ये डाउट सेशन नहीं है ना, अभी कुछ करवाओगे नहीं ना, पढ़ाओगे नहीं ना PZX? नो बेटा नो, अब मैं रुक गया हूँ। PZX मैं कल करूँगा आपके साथ। ऑब्वियसली कल पहले जो आपके डाउट्स आएंगे वो डाउट्स कवर अप करूँगा, देन आई विल पिक अप द PZX ट्रायंगल। पहले मैं आपको PZX का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वी विल बेसिकली डू द इक्विनॉक्शियल सिस्टम, द हॉराइजन सिस्टम एंड द PZX ट्रायंगल, ये तीनों चीज़ें करेंगे। इसके बाद बेटा हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच इज़ स्टार सूटेबल फॉर साइट। ठीक है सर। वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यू हैव नॉट डन दैट इन सेकंड मेट्स। सो कल उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे हम, कल हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस सी हाउ मच वी कैन डू। वी विल बी एबल टू कवर द बेसिक्स। उसके लिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, ट्वाइलाइट का कॉन्सेप्ट चाहिए, स्टेलर मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट चाहिए, वो करेंगे कल। दैट विल बी टुमारो। ठीक है सर, ठीक है सर, फिर मैं लॉग आउट कर रहा हूँ सर। ओके, थैंक यू सर। फ्लाइट बाय मेरिडियन एल्टीट्यूड पे जब हम ऑब्जर्व लैटिट्यूड तो निकाल लेते हैं, फिर कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि उसका GMT निकालने के लिए हमें उल्टा चलना होता है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है सर, जब वो डेट चेंज होती है स्टार्स का। ओके ओके बेटा, एग्जैक्ट GMT निकाल पा रहे हो? एग्जैक्ट GMT, हाँ सर, वो एग्जैक्ट GMT जब LHA 0 रख के GMT निकाल लिया आपने, वहां तक तो डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके, अब जो टाइम आपने निकाला बेटा, जो भी टाइम आपके पास आया, दैट विल बी द GMT टाइम, राइट? यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, वो GMT टाइम है, आपको उसे LMT में कन्वर्ट करना है। पहली चीज़ ये करनी है, कन्वर्ट इट टू LMT। कर सकते हो LIT लगा के, कन्वर्ट हो जाएगा LMT में। यस सर। अब आप चेक करो कि जो LMT टाइम में आपकी डेट आ रही है, इज इट मैचिंग विद द डेट गिवन इन द क्वेश्चन? क्योंकि क्वेश्चन में जो डेट होती है वो LMT की डेट होती है। इफ इट इज मैचिंग, एवरीथिंग इज फाइन। इफ इट इज नॉट मैचिंग, ये एक दिन आगे या एक दिन पीछे जा सकती है। इफ इट इज नॉट मैचिंग, ये एक दिन पीछे चली गई। अब आपको तो इसे एक दिन आगे लेके आना है, तो क्या करेंगे, एल्मनैक में एक दिन बाद एंटर करो बेटा। सो डू द स्टेप्स अगेन। LHA 0 रखा था, GHA की वैल्यू आई थी, नेक्स्ट डे में एंटर करो एल्मनैक में एंड गेट द टाइम, इट विल गिव यू द करेक्ट टाइम। ओके, डेट में यू गॉट म्यूटेड अभी, अनम्यूट एंड आस्क अगेन। डेट लाइक 22 सितंबर को GMT का मैंने निकाला है, फिर उसके बाद वो उसके लिए 21 सितंबर में फिर GHA निकालेंगे, GHA। यस दैट्स राइट बेटा, अगर एक दिन पीछे जाना है तो 21 में दोबारा से एंटर करो और वो प्रोसीजर अगेन यू डू दैट अगेन। ओके सर। ओके अंडरस्टूड। ओके, okay beta, so what I do is I am going to send you the assignment now, so work out on that assignment. We do the doubts tomorrow and after the doubts we move on to, आपको doubts आएंगे, I expect those doubts, और we will cover that doubts tomorrow, so वो करेंगे and then we will move ahead to the PZX triangle, right? Okay sir. Okay बेटा, done. So we are done for today. See you tomorrow. एक चीज पूछना था सर। बोलो बेटा, पूछो। सर ये अफवाह है, what it is I don't know, but someone is saying कि 6 questions to be right for passing. Some are saying कि 2 questions should be right in part C, मतलब we should get 30 marks. ऐसा है क्या सर? ऐसा कुछ है क्या? There is something like this. ऐसा कुछ नहीं है। सी बेटा, ये इंडिविजुअल एग्जामिनर में से किसी के माइंड से बात निकलती है, दैट